Hi all, welcome to RS Educon now. So I'm a control and coordination now part 1 discuss करथिले. In this video we'll discuss about some more questions. तो जेहेतु एटा important chapter तो यार किछि question मु cover करथिले and बाकी question गुडा हमें part 2 रे सारिबा. So let's discuss. The first question of today's video is which of the following is true about the synaptic cleft? Okay. तो synaptic cleft कोण मु टिके एठी आइडिया दे दउची. तो synaptic cleft कहले हमर जोटा फर्स्ट हम बुझिबा जे सिनाप्स टा कोण. सिनाप्स होची कोण ना हमर जोटा होची जंक्शन. हमर सिनाप्स कहले कोण आमे बुझिले जे हमर एडा होची कोण ना हमर सिनाप्टिक नर्व जोटा थिला एक्सन रे एंड एटा होची हमर कोण ना एटा हला हमर टेंड्रन न जो सरफेस टा. ओके जस्ट खाली मने पकाओ जे हमर कोठो कोठी ट्रांसफर होची. आमे कोन पढुथले ना हमर जोगुडा इन्फॉर्मेशन रहिला बा इंपल्स रहिला सेटा सब ट्रांसफर कोन हुए कोठ हुए ना हमर एठी ऊपर रहिला हमर एक्सन रो एंड रे जो थाए सेटा हला हमर सिनाप्टिक नर्व आउ डेंड्रन न जो ब्रांच गुडा जो रहिला हमर सेल बॉडी रे सेटा हला डेंड्रन. तो डेंड्रन भितरे हमर एक्सन न सिनाप्टिक बॉडी आउ डेंड्रन भितरे ही इंपल्स सब पास करे. तो से कहूची which of the following is true about the synaptic cleft. तो synaptic cleft आमे काहाकू कहेबा. देखो वेरी वेरी इजी. तुम डायग्राम टा मन रखिले एते ऑप्शन आमे पढिया दरकार नै. ऊपर टा एठी देखो मु जो डायग्राम टा करिछि हमर ऊपर टा होची कोन ना हमर एक्सन रो एंड जोटा रहिला हमर सिनाप्टिक नर्व आउ तळटा रहउची हमर डेंड्रन. तो एई दीटा भितरे एई जो एरिया टा रहिला देखो. तो एठी जो गैप टा देखा होची जोटा मु ब्लैक कलर रे कली. द गैप बिटवीन द सिनाप्टिक नर्व एंड डेंड्रन इज कॉल्ड योर cleft. Synaptic cleft. Okay, this is your synaptic cleft. तो सिनाप्टिक लोब कौन है हमें डायग्राम रे देखि देले. देन हमर ऑप्शन कोन देछि इट इज द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द प्रीसिनाप्टिक न्यूरॉन. नो स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन सेटा भी नुहे. एंड इट इज द स्पेस सेपरेटिंग द प्री एंड पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन्स. ओके सेटा ही हमें देखिला हमर होची कोन ना सिनाप्टिक क्लेफ्ट. ओके सो फोर्थ ऑप्शन को जिबा दरकार नाही. हमर ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके then come to next question. The chemical which regulate the synaptic transmission. देखो very very important question. The chemicals which regulate the synaptic transmission at chemical synapses are called. Okay let me clear you what is chemical synapse. Okay तो आमे ऊपर चित्रटा देखिबा. एठी हमर ऊपर थिला एटा कोन मु कहली ना एक्सन ना हमर थिला. just a minute let me change its color. तो ये ऑलरेडी रेड कलर रे मु जो डायग्राम टा करछि सेटा देखो. ऊपर टा हमर थिला सिनाप्टिक लोब एंड तळटा थिला हमर डेंड्रन. तो दीटा भितरे जो गैप रहिला हमें ताको कहले सिनाप्टिक क्लेफ्ट बोली. वी डिस्कस्ड इट इन द एबव क्वेश्चन. ओके सो इनसाइड द सिनाप्टिक नोब जस्ट ए देखो एटा जो येलो येलो उडा अछि. ओके तो ए येलो येलो रे मु जो राउंड राउंड सब करिछि जस्ट मार्क करो. येलो रे राउंड राउंड करिछि एंड ता भितरे डॉट डॉट मु सब बसैछि कोन ना हमरो रेड कलर रे जो डॉट डॉट सब बसैछि. ओके तो ए जो येलो कलर रे जहा को सब करिछि सेगुडा को आमे बुझिबा कोन ना सेगुडा होचंदी हमरो वेसिकल्स. ओके दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स. जस्ट एठी मु कर दोछि येलो कलर को आमे बुझिबा वेसिकल्स. ओके वेसिकल्स. ओके देन इनसाइड ये जो येलो कलर भितरे देखो डॉट डॉट जो रेड कलर रो रहउची लागी सेटा ही होउचंती केमिकल व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स. न्यूरो ट्रांसमीटर्स. clear and here are C plus iron calcium Ca. Okay and yes this is called presynaptic membrane. एटा मन रखिबा हमें presynaptic membrane. Okay
and that is post synaptic membrane. ओके ये मन रखि दियो ये बहुत भी क्वेश्चन कवर हो जाउची देखो आउ थरे क्लियर कहि दोची रेड कलर रे जोटा मार्क करली हमरो ऊपरटा हला सिनाप्टिक नोब एंड तळटा हला हमरो कोन ना डेंड्रन एंड विथ द गैप बिटवीन synaptic knob and dendron is called as the cleft ऊपर लिखिली and जोटा येलो कलर रे राउंड राउंड देखेली मु synaptic knob रे सेटा हमर हेले वेसिकल एंड इनसाइड वेसिकल हमर रहिले कोन ना डॉट डॉट शेप रो रेड कलर रे those are neurotransmitters. Actually these neurotransmitters are the chemicals which passes from the synaptic knob to dendron. Okay पढिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन ने डिस्कस करिबा. Then the membrane of synaptic knob is called the presynaptic membrane and the membrane of the dendron is called the postsynaptic membrane. Okay and presynaptic membrane ऊपरे हमर कैल्शियम आयन सब थांती. Okay Ca2 plus ये 2 plus टा मु लिखिनी Ca2 plus. Okay and हमर डेंड्रन ऊपर देखो एमती येलो रे मु देइची येलो रे टिके गैप देइची सेगुडा सब होचन हमर कोन ना चैनल सेरा सब हेला हमर कोन सोडियम चैनल. These are sodium channels. Okay then so what was our question? The chemicals which regulate the synaptic transmission at chemical synapses are called neurotransmitters. पढ़िले हमें से कौन कहूची क्वेश्चन कहूची जे जो केमिकल टा हमर सिनाप्टिक ट्रांसमिशन को रेगुलेट करे सेटा होची कोन ना हमर न्यूरोट्रांसमीटर. ए न्यूरोट्रांसमीटर गुडा ही होचंती हमर केमिकल जोटा की पास करंती कोडा हमर सिनाप्टिक नोब रु डेंड्रन को. ओके सो योर राइट ऑप्शन इज neurotransmitters. Okay then come to next question. Rapid movement of Na ions, this is Na plus. Okay Na plus. So rapid movement of sodium ions from extracellular fluid to inside the nerve cell leads to. ओके टिके भल से बुझिबा क्वेश्चन टा जोटा हमरो Na plus रो आयन रो मूवमेंट होउची सेटा हमरो कोन ताकू कोन को आउची जे हमर सेटा पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और repolarization. Okay so correct answer is depolarization. Okay so let me clear you what is depolarization. just मु यार बिफोर जो डायग्राम टा करिथिली सेटा हम टिके मन पकेबा हमर कोन थिला ना सिनाप्टिक नोब थिला. Okay this was your synaptic node. Okay and here was your dendron. Okay एमती थिला तो हमर कोन होची एठी मु कहिली हमर कोन रहउतला ना Ca plus रहउतला. Okay let me change the color. एठी कोन होतला हमर ना न्यूरोट्रांसमीटर सब रहउतला का भितरे या भितरे जो वेसिकल भितरे सब न्यूरोट्रांसमीटर रहउतला. ओके तो न्यूरोट्रांसमीटर रहउतला आ एठी कोन होतला ना Ca plus रहउतला +2 बा 2 plus रहउतला एंड एठी हमर कोन होतला सब ना सोडियम चैनल रहउतला हला. सोडियम टा हमर एठी थाए. एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मन रखिबा ने प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन ने हमर कैल्शियम थाए आउ पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन ने हमर सोडियम थाए. ओके तो कोन हबा हमर ना डीपोलराइजेशन हम बुझतिले तो डीपोलराइजेशन होची कोन ना डीपोलराइजेशन सेते बेले हबो देखो हमर जो सिनाप्टिक एक्शन टा रहउची सेटा हमर दी प्रकार हेते गोटे. ओके तो हम टाइप्स ऑफ सिनाप्स पढ़िले हमर टाइप्स ऑफ सिनाप्स इज ऑफ टू टाइप्स. गोटे फर्स्ट होची हमर कोन ना गोटे होची हमर केमिकल सिनाप्स पढ़िथिबा सुनिथिबो ना गोटे होची हमर केमिकल सिनाप्स आ गोटे होची हमर इलेक्ट्रिकल सिनाप्स. ओके इलेक्ट्रिकल तो केमिकल सिनाप्स काकू कहउची ना जेते बेले हमर एठी देखो एई सिनाप्टिक नोब आउ डेंड्रन भितरे जेते बेले देखिबा जे गैप टा बेसी हे जाउची. ओके
बेसी हो जाउची मीन्स आमर 10 टू 20 माइक्रोन हो जाउची ओके तो सेते बेले कोन होउची ना आमर आयन टा एपटु बा इम्पल्स टा आमर सिनाप्टिक नोब रु डेंड्रन को जिबा पई किछि केमिकल कर आवश्यकता पड़ुची तो से केमिकल माने हेले किए ना ए आमर जो न्यूरोट्रांसमिटर्स these are embedded inside the vesicle in form of chemicals क्लियर तो ए न्यूरोट्रांसमिटर गुरा ही होउचंदी केमिकल जो माने हेल्प करिवे हमर कोन ना जो हमर इम्पल्स को ट्रांसफर करिया पाई ओके तो हायर अमाउंट रे जोठी अछि लोअर अमाउंट को जिबा पाई दैट इज कॉल्ड डिपोलराइजेशन हायर अमाउंट रु हमर लोअर अमाउंट को जिबा पाई ओके बट एठी कोन हुए ना एठी जेहेतु हमर केमिकल केस रे केमिकल सिनाप्स रे जेहेतु हमर दरकार होउची कोन हमर क्लेपटा गैपटा बड़ हो जाउची 20 टू 10 टू 20 नैनोमीटर हो जाउची सेठी हमर कोन होउची ना केमिकल सिनाप्स होउची आ सेठी हमर डिपोलराइजेशन होउनी बट ऑन द अदर हैंड कोन होउची ना जत्ते बेले हमर सिनाप्टिक नोब आउ डेंड्रन भितरे हमर डिस्टेंस टा बा गैपटा भल से बुझो गैपटा जत्ते बेले कम रहउची मींस कोन ना 0.2 नैनोमीटर ओके एम भलिया जत्ते कम हो जाउची सेते कोन होउची ना हमर गैपटा कम हैला मींस सेते बेले हमर आउ किछि दरकार नै ए देखो जत्ते बेले गैपटा हमर कम हबो कोन मींस एटा पूरा लागी कि पाखा पाखिया भितरे थिबो ओके तो सेते बेले हमर कोन होउची ना कोनोसे केमिकल दरकार पड़ुनी डायरेक्ट हमर कोन होउची ना एठी जो हमर कैल्शियम आयन जो थिला सेठु कोन होउची ना हमर एठी तळ को पळी आसुची कोन ना इम्पल्स ओडा छाए पळी आसुची हायर लु लोअर लेवल को पळी आसुची ओके हायर ग्रेडियंट रु लोअर ग्रेडियंट को गला बलिया सो दैट इज कॉल्ड डिपोलराइजेशन क्लियर and another question just remember here that तो आमर सोडियम टा भी पॉजिटिव आयन रहुची सेठी भी आमर डिपोलराइजेशन होउची gap between synaptic nerve and the dendron or synaptic cleft is 10 to 20 nanometer in case of your chemical synapse okay and in case of your electrical synapse this is electrical synapse your gap is 0.2 nanometer eta mon rakhiba okay then come to next question depolarization is the passive process बुझेली पैसिव प्रोसेस हमें कोन कहउचे ना किछि गोटे हमर एक्स्ट्रा जिंस दरकार होनी एक्टिव ताकू के टाणी के नवा पई जेमति हमर केमिकल सिनाप्स रे होउतिला हमर कोन ना केमिकल रिक्वायर्ड होउतिला हमर इंपल्स नवा पई हायर रु लोअर को नवा पई तो डिपोलराइजेशन ने हमर कोन होचे ना सेमिति किछि एक्टिव जिंस दरकार नै बा कार हेल्प दरकार नै ओके जेहेतु गैप टा हमर कम अछि से आराम से हमर हायर रु लोअर को पळे आछि ओके दैट इज डिपोलराइजेशन दैट्स व्हाई इट इज अ पैसिव प्रोसेस clear then come to next question which area does not belong to cerebral cortex okay बढ़िया क्वेश्चन टे तो हमरो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रो एरिया रे कोहू एरिया टा आसुनी ओके तो फर्स्ट लेट मी शो यू द डायग्राम मोटे डायग्राम कर दउची सेट तो माने क्लियर हे परिबो अबाउट सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रा मैं जदी गोटे डायग्राम करबा जस्ट देखो सिंपल डायग्राम टे कर दउ सेठी ओके सेरिब्रल कॉर्टेक्स रा ए भलिया जदी हम गोटे डायग्राम करबा तो हमर एठी तीनटा रहउची एंड ए यार एठु टिके एमदी फोल्डेड क्लियर हाईली फोल्डेड एरिया थिबो सब that is called gyrus ulcus okay तो सेटा हमर छाडो हमर ने टॉपिक बेसी हायर हे जिवो हमर कथा होउची जे हमें जानिबा जे हमर सब डिफरेंट एरियाज कोन हमर एटा रहिला कोन ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रे हमर मेनली तीनटा एरिया रहउची गोटे रहउची हमर सेंसरी एरिया आ गोटे रहउची मोटर एरिया एटा हमर रहिला सेंसरी एरिया सेंसरी ओके एंड एट हमर रहिला मोटर मोटर एरिया एंड एट रहिला हमर एसोसिएशन एरिया
association क्लियर तीनटा एरिया आमर रोचे गोटे रहिला सेंसोरी एरिया देन आमर मोटर एरिया देन आमर रहिला एसोसिएशन एरिया ओके तो सेंसोरी एरिया रो आमर काम होची कोन ना जेते सब मन रखिबा एठी सेंसोरी एरिया रो आमर काम होची कोन ना जेते सब सेंस वाला जिंस ओके सेंस वाला जिंस मींस आमर कोन ना आमर टच करलिबा हॉट लागिबा कोल्ड लागिबा पेन होबा ए सब आमर सेंसोरी एरिया रे कंडक्टेड हबो ओके सो लाइक वाइज आमर आउ कोन रहला तापरे मोटर रहला तो मोटर एरिया रे कोन हबो ना इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स ऑफ लिम्स एंड टंग्स ओके तो आमर जो टंग रहिला बा आमर लिम्स रहिला ए सबुरो ए सब कोन मोटर हिसाब रे गले तो तांकर सब जो फंक्शन को तांकु सब कंट्रोल करिवो किए ना को एरिया रे कंट्रोल हुए ना हमर ए मोटर एरिया रे ओके देन हमर आसिला एसोसिएशन तो एसोसिएशन कहिले से जगह रे हमर कोन कहबो ना एसोसिएशन वर्ड रो हमें बुझी पारुचे एसोसिएशन मींस कोन हेतबो ना दुईटा जिंस मिसी करी हेतिबो तो सेंसोरी आ मोटर ए दुईटा रे एरिया जोठी हमर मिसु चंती दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया ओके क्लियरली बुझिबा एटे ही केतरा क्वेश्चन आउ क्लियर हे जबो तमानकर तो एसोसिएशन बिटवीन सेंसोरी इनपुट्स एंड मोटर आउटपुट्स एटा हम जानि छ मोटर जोटा होच कोन हमर ना आउटपुट सेंसोरी जोटा हला इनपुट देन ए दुईटांक भितरे कम्युनिकेशन टा एरिया होची हमर एसोसिएशन एरिया आर मेनली फंक्शन होची हमर मेमोरी पाई ओके एसोसिएशन एरिया टा मेनली हमर कान पाई मेमोरी पाई एटा मन रखिबा ओके तो सिंपली हमर क्वेश्चन को एबे देखिले बुझि पारिबा आराम से व्हिच एरिया डज नॉट बिलोंग टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स सो दैट इज ब्रोकास एरिया ओके ब्रोकास एरिया अलगा एरिया सेटा हमर अछि गोटे क्वेश्चन ता रिलेटेड क्वेश्चन अछि सेठी मु क्लियर करिबो ओके देन द पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड ओके वेरी इजी क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड को हमर कोटा थाए ना मेडुला ऑब्लोंगाटा ओके तीनटा हमर रहउची ना हमर जोटा हाइंड ब्रेन जोटा रहिला हाइंड ब्रेन ने हमर कोन होची ना तीनटा पार्ट रहउची गोटे होची हमर पॉन्स होची आ गोटे हला हमर सॉरी गोटे हमर पॉन्स हला एट लिखिची पॉन्स एक नंबर गोटे हला हमर पॉन्स देन हमर हला सेरिबेलम देन हला हमर मेडुला ऑब्लोंगाटा तो आंको भितरु हमर मेडुला ऑब्लोंगाटा होची कोन कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड then the interneurons are present in the sensory receptor spinal cord efferent path or effectors तो interneurons हमर कहिले हमर स्पाइनल कॉर्ड रे ही थाए ओके तो इंटरन्यूरन हमें काहा को कहिबा इंटरन्यूरन सिस्टम टिके बुझे देउचे एठी हमर रिफ्लेक्स रे जोटा पढ़ा जाए सिनाप्टिक रिफ्लेक्स जोटा पढ़ा जाए सेटा हमर पढ़ा जाए गोटे मोनोसिनाप्टिक रिफ्लेक्स आ गोटे हमर पॉलीसिनाप्टिक रिफ्लेक्स मन पडुची तो नेम रो हमर जणा होची ना एठी होची कोन ना हमर मोनोसिनाप्टिक कहिले वन सिनाप्स बिटवीन सेंसोरी एंड मोटर न्यूरॉन्स ओके तो सेंसोरी आ मोटर न्यूरॉन्स जो हमर रहिबो एठी देखो हमर कोन हबो गोटे सेंसोरी रे आगे आसिला ओके देन सेटा हमर एठी सीएनएस रहिला एठी हमर रहिला सीएनएस ओके देन एठू हमर पुणी जीवो अगेन कोडी ना मोटर पाखु को एठू सेंसोरी आसिला एठी हमर सीएनएस रहिला ओके तो एठू पुणी जीवो हमर कोडी किसे ना मोटर पाखु को क्लियर तो एठी हमर कोन होची ना मोनोसिनाप्टिक एठी गोटे सिनाप्ट होची ओके वन सिनाप्स बिटवीन द sensory and motor neurons then हमर जति polysynaptic reflex देखिबा एटी कोन हबो ना सेम हमर आसिला कोन ना सेंसोरी आसिला ओके देन एटी हमर सीएनएस रहिला एटा हला हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहिला देन एठू कोन हबो ना एटा हमर एठू आइला एटा डेंड्रन अछि एठू कोन हबो ना एटा आउ गुटे सीएनएस भितरे एटा कोन करिवो ना हमरो दीटा
दीटा सिनाप्टिक जगह देकी जीव दीटा आमर आसीबो कोन ना सिनाप्स दीटा जगह ठीक अछि टू सिनाप्सेस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर देन एठी आसिला मोटर को जेमती जीवा कथा गला ओके तो एठी कोन होतिला ना हमर गोटे सिनाप्ट होतिला दैट्स व्हाई इट इज मोनोसिनाप्टिक एंड एठी कोन हैला ना दीटा सिनाप हैला सिनाप्स बुझी परछो तो हमर गैप जोठी रहि जाउची हां एंड एठी दीटा जो हैला सेटा हमर हैला कोन ना पॉलीसिनाप्टिक तो ए जो पॉलीसिनाप्टिक रे हमर ए जो दीटा रहउचंती आकु को हाउची दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर इंटरन्यूरन सिस्टम ओके भलसे मन रखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दिस इज देखो डायग्राम मन रखि देले तम माइंड रे पूरा छापी हे कि रहि जिवो neuron okay these are interneurons found inside polysynaptic का भीतर मिले एटा भी गोटे क्वेश्चन देखो interneuron is found inside which reflex inside polysynaptic reflex okay and your reflex is of two types one is monosynaptic reflex then polysynaptic reflex and monosynaptic reflex means one synapse between sensory and motor neurons and polysynaptic means two synapses between the sensory and motor okay and in case of your polysynaptic they are found the interneuron system or these are the interneurons okay and yes आउ गोटे कथा एठी कहि दोची हमर ए जो इंटरन्यूरन सब रहिले एटा ऑल विड्राल रिफ्लेक्स जोटा हमको ठंडा लागिले हम हाथटा को हमें नै जाउचे कि कोडे हम हाथ गरम जिंस धरि पकेले हाथटा को हमें पछकु नै जाउचे ओके कंटा फुटी जाउची हमें पछकु नै जाउचे ए सब काम होउची कोन ना हमर ऑल विड्राल रिफ्लेक्स आर ड्यू टू दिस polysynaptic reflex or due to this interneuron movement clear then amaro monosynaptic जदि पचारे amaro jerk reflex कहले जोटा amaro कहूनी बाडे हे गला मने कर कांथरे की कोठी करंट माइला भलिया जोटा लागे that is jerk reflex okay so those are comes under this monosynaptic okay then come to next question which of the following is not a part of telencephalon okay telencephalon term देखिकी किछि भी कंफ्यूज होबानी वेरी वेरी इजी ओके पिला कोन करंदी ना टेलेनसेफालन देखिबे तो टर्म टा कोन डिफिकल्ट लागुची बोली आ क्वेश्चन न पड़ी न बुझी पूरा छाड़ी के चली छी ओके बट देखो क्वेश्चन टा जस्ट टिके बुझी दियो केते इजी जानिबो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेलेनसेफालन टेलेनसेफालन ना कोटा पार्ट नुहे ओके टेलेनसेफालन टा हमर कोन रिलेटेड रहउची ब्रेन तो ब्रेन कहिले हमें जदि ह्यूमन ब्रेन को कंसीडरेशन को नबा देन हमर ह्यूमन ब्रेन is divided into three parts गोटे हला हमर forebrain then midbrain then hindbrain okay so your forebrain is called progencephalon and midbrain is called mesencephalon and hindbrain is called rhombencephalon okay तो progencephalon जोटा रहिला बा forebrain जोटा रहिला that is divided into two parts one is called your telencephalon and diencephalon clear एठी लेखु जेबे so forebrain को हमें कहिले progencephalon and progencephalon is divided into two parts one is your telencephalon then diencephalon and telencephalon is again divided into four parts one is your cerebrum then olfactory then hippocampus then amygdala okay so cerebrum is the largest part of our brain okay एटा भलसे मन रखिबा largest part of human brain is cerebrum okay not cerebellum it's cerebrum okay then olfactory कहले this is responsible for smell हमें जते सब बासना जहा सुंगुचे that is for olfactory then हमर आसिला hippocampus जोटा को हमें कहउचे ram of the brain okay RAM of the brain और एटा कोन करे ना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म रे कन्वर्ट करे कि हमर ए हिपोकैम्पस ओके देन हमर आसिला अमाइगडाला रा काम होची कोन ना हमर सेटा फोर ब्रेन ने थाए एंड यस हमर ए हां
डायनसेफालन कहले आमर तीन प्रकार आसुची गोटे होची आमर डायनसेफालन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स वन इज योर थैलामस देन हाइपोथैलामस एपिथैलामस लिखि देइछि एठी देन आमर एठु मन रख जे एठी हिप्पोकैम्पस पाखरु आरंभ करी आमर ए जो एपिथैलामस सॉरी हाइपोथैलामस पर्यंत ओके हिप्पोकैम्पस अमाइगडाला थैलामस एंड हाइपोथैलामस ओके ए एरिया को आमे कहू लिम्बिक सिस्टम ओके लिम्बिक सिस्टम रू बहुत क्वेश्चन आसे मु देइछि भी आगु को क्वेश्चन देइछि तो लिम्बिक सिस्टम मन रख एटा हमर इमोशनल ब्रेन और दिस इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम कौन कौन आसुची हमर लिम्बिक सिस्टम रे ना हिप्पोकैम्पस अमाइगडाला थैलामस एंड हाइपोथैलामस क्लियर so let's back to our question what was our question which of the following is not a part of telencephalon तो telencephalon ना हमें एटी डिस्कस कले सब जांक तो कोउटा जदी पार्ट नुहे बोली telencephalon ना हमें कहिबा देन एटी हमर देखो ऑप्शन 3 हाइपोथैलामस लिखिची हाइपोथैलामस हमर का अंडर आसुची ना डायनसेफालन रे आसुची हैला हमें कहबा कॉर्पस स्ट्रेटम आउ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एटा तो हमें एटी डिस्कस कलेनी बट दोज आर रिलेटेड टू telencephalon ओके ता सहित ए जो हमें डिस्कस कले सेरिब्रम ऑल्फैक्टरी बा हिप्पोकैम्पस आंक सहित कोट ना कोटे माने सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउ कॉर्पस स्ट्रेटम ए सब जोड़िए के अछंदी सो दैट्स व्हाई दोज कम्स अंडर प्रोजेनसेफालन सॉरी telencephalon but hypothalamus comes under diencephalon directly okay then come to next question so correct option for this question is hypothalamus or option 3 then next question CSF is not present in CSF कहले आमर होची कोन ना cerebrospinal fluid ओके भलसे मन रखिबा CSF stands for cerebrospinal fluid okay so cerebrospinal fluid is not present in dash तो cerebrospinal fluid बा CSF टा आमर कोथिरे प्रेजेंट न थाए दैट इज ऑप्शन 3 सबड्यूरल स्पेस ओके सबड्यूरल स्पेस कोटा म देखै दउची सबड्यूरल स्पेस एटी देखो एटी डायग्राम टा म देई देइची हमर सीएफएस एटा होची सेरिब्रल फ्लूइड ओके तो सेटा प्रेजेंट न थाए हमर कोठी ना सबड्यूरल स्पेस जोठी रहला एटी ड्यूरा दे देइची सबड्यूरल रहला सेथिरे हमर न थाए then mark the area of cerebral cortex responsible for complex functions like intensory association memory and communication okay तो मु ऑलरेडी कहि देइची हमर सेंसरी एरिया रो काम कोन पूर्वरु हमें डिस्कस कले ना सेंसरी एरिया रे हमर काम रहिला सब जेते भी हमें टच करूचे से सब जिंस पाई देन टच हमर रहिला जोरा हॉट कोल्ड ए सब रहिला हमर हॉट कोल्ड ए सब जिंस को हमें टच सेडा सब रहिला हमर सेंसरी एरिया आ मोटर एरिया कहिथिले कोन ना मोटर रे हमर आस्तिला या पूर्वरु जोटी हमर कॉर्टेक्स बुझेइथिली ओके सेरिब्रल कॉर्टेक्स बुझेइथिली सेठी बुझेइथिली से हमर मोटर अंडर रे आछंती कोन ना वॉलंटरी मसल सब लिम्स आउ टंग्स जोड़ा वॉलंटरी मसल सब आसिले देन एसोसिएटिव एरिया रे हमर आसिले कोन ना मेमोरी आसिला ओके तो से क्वेश्चन हमर कोन कहूची ना इंटेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन तो मेमोरी वर्ड आसी मींस आखि बुझी के हमर associative area that is option 3 is your right option then come to next question which of the following is not a function of hypothalamus okay तो हाइपोथैलामस रो हमर फंक्शन होउची कोन ना शॉर्टली खाली टिके कहि दउची हाइपोथैलामस रो हमर काम होउची कोन ना मु कहिले
जे हाइपोथैलेमस रो काम हमर होची and that controls regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction. हमर एटा आसुची ना इमोशनल एरिया रे कहिले इमोशनल एरिया और लिम्बिक सिस्टम रे आसुची हाइपोथैलेमस टा. सो मने रखिबा हमर हाइपोथैलेमस टा is responsible for expression of emotional reaction, that means anger, pleasure, sad, feelings, sexual behavior. ओके ए सब हमर आछन कोथरे ना हाइपोथैलेमस रे. तो क्वेश्चन हमर कहूछ कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस रो कोटा फंक्शन नुहे. ओके सो ऑप्शन 1 जदि देखिबा करेक्शन ऑफ सिग्नल्स कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सेटा हमर आसुची. देन सेट बॉडी टेम्परेचर एटा भी आसीबो हमर. Then option 3, it organizes behavior related to survival of species. Yes, correct. Then it regulates planning and execution of stereotyped movement. तो stereotyped movement रे हमरो hypothalamus रो किछि भी role न थाए. That's why your option 4 is the right option. Okay. Then one of the following is not the lobe of cerebral hemisphere. ओके तो सेरिबल हेमिस्फियर रो हमरो कोउटा को लोबटा हमरो सेरिबल हेमिस्फियर रे आसु नाही. ओके तो सेरिबल हेमिस्फियर आमे जदि देखिबा हम देखो हेमिस्फियर काहा को कुआ होची एट देखो ए जो चित्रटा देइची एटी देखो एटी जो रेड कलर रे मारे बादाम भलिया दिटा देखा होनी. दैट मीन्स दीज आर टू सेरिबल हेमिस्फियर्स. गोटे हमरो लेफ्ट हेमिस्फियर दीटा हमरो हेमिस्फियर थाए. ह्यूमन ब्रेन टा सबले हमरो हेमिस्फियर दीटा हेमिस्फियर सेटा हमरो जोड़ी हे थांती. ओके कर्पस कैलोसोम द्वारा जोड़ी हे थांती. सो लेफ्ट हेमिस्फियर और राइट हेमिस्फियर. ओके तो गोटे ईच हेमिस्फियर रे हमर कोन थांती ना चारिटा लोब थांती. एमती आमे जदि ए भलिया नै जिबा गोटे हेमिस्फियर नै गले देन हमर एथिरे चारिटा लोब रहिबे. ओके चारिटा लोब एटी देखै छी भी देखो एटी जो डायग्राम टा भी मु देइची गोटा हला हमर फ्रंटल लोब, देन हमर हला पैरिएटल लोब, देन हमर हला ऑसिपिटल लोब, देन हमर हला टेम्पोरल लोब. ओके एटी चित्र भी देई देइची देखो फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब. फ्रंटल लोब कहले हमर सामना को मुंडर जो पोर्शन टा जस्ट देखो हमर नाक सीधारू भाबी नियो जे नाक सीधारू हम मुंडटा दुई फाळा मन कर दुई फाळा हेले गोटे ईच साइड को हमें कहबा गोटे हेमिस्फियर भलिया. ओके तो से गोटे साइड कथा हमें यदि चिंता करबा गोटे फाळ कथा तो फ्रंट पोर्शन टा हला हमर फ्रंटल लोब. देन हमर ताळु ऊपर को जो पोर्शन टा रहउचे सेटा हला हमर पैरिएटल लोब. देन हमर कान तळु को जो एरिया टा रहउचे दैट इज टेम्पोरल लोब एंड पछ पटु को जो उडा रहउचे दैट इज occipital lobe. Okay तो क्वेश्चन से कौन कहउचे ना one which of the following is not the lobe of cerebral hemisphere. आमे देखिले हमर कोडा parietal lobe आसिला, temporal lobe आसिला, occipital lobe भी आसिला. तो आसिला जदि कोडा हमर ना सेटा olfactory lobe. Okay so option 4 is your right option. Then highly vascular and closely investing protective coat around the brain is known as एटा मन रखिबा जे हमर highly vascular और closely investing protective coat. तो protective coat around our brain is dura mater. Okay dura mater that is option 3. एटी डायग्राम भी मु देई देइची डायग्राम एटी देखि दो एटा dura mater एरिया सेटा होचे हमर कोन ना प्रोटेक्टिव कोट ऑफ ब्रेन. एंड यस एट गोटे जिनस हम छाड़ी गली ए जो कहू नथिले कि एटी हमर लोब कथा जोटा हमर फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब आउ ऑसिपिटल लोब रहिला. ए लोब गुडा कर वर्क सब मु कहि दे जाउची. एटा लेखिनियो जे जोटा हमर लेखिया पे जागा नै सो मु कहि दउची लेखिनियो जोटा हमर फ्रंटल मु काहे कि कहउची ना एटी गोटे ब्रोकास एरिया हमर आसुची. मु कहि नथिले ब्रोकास एरिया इज एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो ब्रोकास एरिया एटी टिके डिस्कस कर दबा से पे मु पुनी बैक कली. तो आमे चारिटा लोब पाइले इन ईच हेमिस्फियर. तो हमर
आसला चारिटा लोब कौन गोटे आसला आमर फ्रंटाल लोब देन पैरिएटल लोब ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोराल लोब तो फ्रंटाल लोब रे आमर काम होची कौन ना जेते सब आमर लर्निंग रीजनिंग क्रिएटिव आइडिया एगुडा सब आमर एई लोब रे ही हुए कोठी आमर फ्रंटाल लोब रे ओके देन टेम्पोराल रे आमर कोन होची ना सेंसरी स्पीच एरिया सेटा होची हला कि तापर आमर हियरिंग आउ स्मेल पई सब ऑसिपिटल टा होची आमर विजन पई आ पेरिएटल टा होची आमर सेंसरी पई देन आमर पेरिएटल टा होची सेंसरी टच हॉट कोल्ड पेरिएटल सबरे सेंसरी रिलेटेड जेतिक सेउडा सब हला आमर पेरिएटल मींस आमर टच हला हॉट हला कोल्ड हला पेन हला दीज आर रिलेटेड टू पेरिएटल लो ओके देन ऑसिपिटल कहले आमर आसीबो विजन पई और टेम्पोरल कहले सेटा आमर आसीबो स्पीच एरिया बा हियरिंग स्मेल ओके देन आमर कथा आसुची जे जो फ्रंटाल लोब ओके फ्रंटाल लोब इज आल्सो कॉल्ड मोटर स्पीच एरिया फ्रंटाल लोब को आमर मोटर स्पीच एरिया भी कुहा जाए क्लियर योर फ्रंटाल लोब is also called as एटा टिके मु लिखि दउची this is your motor speech area or called as Broca's area देखो गोटे वर्ष नीट रे गोटे क्वेश्चन पकईथिला मन नीट पिलांकर जो मेडिकल पिलांकर जे गोटे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख सुन गोटे मानकर मीटिंग चलीची मींस हमर दी पटर क्लाइंट बसचंती ओके तो दी पटर जते लोक बसचंती तो तांकर सेते बेले को लोबटा काम करथिला ओके केते ट्रिकी क्वेश्चन देखो तार ऑप्शन सब एई भलिया थिला हमर पेरिएटल लोब ब्रोकास एरिया टेम्पोरल लोब एमती सब थिला बट फ्रंटाल लोब नथिला हैला कि पिला माने खोजिले फ्रंटाल लोब तो नाही ओके तो ब्रोकास एरिया किंतु अछि ब्रोकास एरिया टा हमर आसुची फ्रंटाल लोब रे तो ब्रोकास एरिया ताको कोन पई कुहा होची ना जत्ते बेले हमर मीटिंग टा चालीची दुई पटर लोक कहउछन एका बेले तो दुई पटर लोक कहू नथिबे ना गोटे पटर लोक जत्ते बेले कहूची आरो पटर लोकटा सुनुची आरो पटर टीम रे जो माने अछन से माने सुनुचंती एंड तापर से माने ताको एनालाइज करचंदी बा थिंकिंग करचंदी बा किछि लर्निंग करचंदी आंगटू कोन माने कहउचंदी बोली से माने अगेन एनालाइज कला परे तांकर पुनी रिमार्क जोटा से माने दउचंती सो ए जो एरिया टा रहिला तांक भीतर अगेन पुनी एपड लोक जे कहउदिला से बंद करिवो पुनी सेपड लोक कहइबो सेम प्रोसीजर एपड लोक भी करिवो तो से जो एरिया टा हमर काम कला कोन सेटा हला हमर ब्रोकास एरिया ओके मींस माने सुनुचंती आ ता भीतर हमर रीजन तांकर क्रिएटिव आइडिया सब खोजुचंती आ अपर माने तांकर अपोजिट रे जे अछंती तांकटू किछि लर्न करचंती देन तांकर रिमार्क दउचंती दैट्स व्हाई दिस इज ब्रोकास एरिया ओके सो ब्रोकास एरिया कहला हम मन रखियो हमर फ्रंटाल लोब रे जोटा कि हमर लर्निंग रीजनिंग क्रिएटिव आइडिया पई रेस्पोंसिबल ओके एंड अनदर क्वेश्चन this area is developed at the age of adolescence आपनकर फ्रंटाल लोब टा जदी डेवलप करि गला ना देन ब्रेन ने आउ किछि भी डेवलप न कले चलिबो ओके किछि यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड रे जहा भी इम्पल्सिबल जिंस सब किछि हमें करि परबा जदी हमर फ्रंटाल लोब टा डेवलप करि गला एंड इट इज नॉर्मली डेवलप एट द एज ऑफ adolescence जदी ता पूर्वर होउचे देन दैट इज एक्सेप्शन or those children are called gifted children. Then next question, genu and splenium are located in important question genu and splenium are located on corpus callosum okay corpus callosum रे ही देखा जानती जोटा कि आमर देखा जाए कोडी corpus callosum टा कोडी देखा जाए ना corpus callosum is found on cerebrum तो cerebrum ऊपर हमर corpus callosum देखा जाए corpus callosum होची कोन आ पूर्वरु जस्ट मु कहउथिली बदे corpus callosum होची कोन ना हमर ह्यूमन मामालियन ब्रेन जेतिक हला कि हमर जेतिक भी मामालियन ब्रेन रहिले सबु हेमिस्फियर ए भलिया दीटा आ पूर्वर डायग्राम रे देखैतिली दीटा एमती बादाम भलिया रहउचंती
तो एमाने कौन होउचंदी ना जहा द्वारा कनेक्ट होउचंती that is called your corpus callosum and your genu and splenium are the part of this corpus callosum. So corpus callosum is found or is located on your cerebrum, and your genu and splenium are also found on cerebrum, because the anterior part of your corpus callosum is curved and is called genu, and the posterior part is called splenium. एटी diagram देखि दियो, and हमर एटा हला corpus callosum, corpus callosum रो एटा हमर होची anterior area टा होची genu, ए portion टा देखि दियो. ओके, देन हमर एटा trunk तो रहिला तार छाडो corpus callosum रो, आउ एटा हमर हला splenium ए area टा. ओके, so that's why, and this is एटा जो कर्व भलिया हमर देखाउनी, this is corpus callosum. एटा ही हमर दीटा जो बीन शेप रो बादाम शेप रो जो रहउची हमर हेमिस्फीयर ब्रेन रहउची मामालियन ब्रेन, सेटा हमर corpus callosum द्वारा जोडी होची. ओके, एंड एटा आउ क्वेश्चन कोन हे परिबो ना योर shape of mammalian brain is hemisphere. Okay, and these both hemispheres are joined by corpus callosum. Okay, so let's back to our question. Genu and splenium are located on cerebrum. Then which of the following is not the main part of limbic system? Limbic system टा मु जस्ट ऊपर कहि देथिली, हमर कोइ आस्तले ना हिपोकैम्पस, अमाइग्डाला, थैलामस और हाइपोथैलामस. तो हमर अच्छा एटा मन रखिया पई लिम्बिक सिस्टम मन रखिया पई गोटे बढ़िया ट्रिक अछि. ओके, दैट इज हैट ऑफ हिपो. हिपो हिपो को हमें जानि छे हिपो नुए जलहस्ती जो रहउची, तो सही हिसाब रे हमें जदि एटा हैट ऑफ हिपो कहि दबा, देन एटा होची ट्रिक हमर लिम्बिक सिस्टम को मन रखिया पई. ओके, हैट ऑफ हिपो. ओके, एच फॉर योर hypothalamus, then A for your amygdala, and T for thalamus. देखला केमता ट्रिक, thalamus, then hippo for hippocampus. Heads of hippo कहिले हमर आसिला हिपोकैम्पस आसुचे, हमर अमाइग्डाला आसुचे, ऑप्शन अमाइग्डाला आसुचे, हिपोकैम्पस भी आसुचे, सेप्टम भी आसुचे. हमर सेप्टम टा हमर होची कोन ना रिलेटेड टू हमर थैलामस. देन हमर जदि आंसर कहूची व्हिच इज नॉट द main part of limbic system, that is corpus stratum. Corpus stratum is not the part of limbic system. Then last question, which part of the limbic system converts information from the short term to long term memory essential in learning? Okay, तो एटा मु जत्ते बेले हमर प्रोजेनसेफालन को टू टाइप्स रे टेलोनसेफालन आउ डायनसेफालन कहिथिली, सेते बेले सेठी कहिथिली जे हमर प्रोजेनसेफालन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टेलोनसेफालन एंड डायनसेफालन. एंड टेलोनसेफालन ने हमर आसुथिला हिपोकैम्पस, जोटा को मु कहउथिली कि दैट इज रैम ऑफ आवर ब्रेन, दैट इज रेस्पोंसिबल to convert the information from short term to long term memory. Okay, so direct question, your option C or option 3 is your right option. देन देखो एटी एटा स्क्रीनशॉट नहीं जाओ, मु जो चारटांक लोब रो तुमको काम बतौथिली, हमर जो चारटा लोब नथिला ईच हेमिस्फीयर रे हमर फ्रंटल लोब गोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करले, जोटा थिला हमर ऑल्फैक्टरी लोब टा आसु नथिला हमर. तो देखो एटी ईच लोब रो मु नहीं जाई एटा गूगल लो नहीं डायग्राम टा, एटा मन रखिया पई तुमको इजी हबो. हमर
frontal lobe टा responsible for thinking, speaking, memory and movement. Then temporal lobe जोटा हमर hearing, learning, feeling ପାଇଁ. Then हमर occipital lobe जोटा vision ପାଇଁ. Then parietal lobe टा हमर touch ପାଇଁ. Okay.